Okay, beta, welcome back. Now, before I proceed for this chart preparation numerical, नवंबर बैच कैंडिडेट्स बेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट में या टॉपिक में एक्स्ट्रा लेक्चर्स तो नहीं चाहिए? मोर लेक्चर्स वेयर द सिलेबस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड? सर नेवल आर्क का बाकी है थोड़ा थ्योरी। ओके, हाउ मच इज पेंडिंग बेटा? सर कोरोजन एंड वेल्डिंग बाकी है। ओके, कोरोजन एंड वेल्डिंग इज रिमेनिंग। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। सो थोड़ा ग्रेन स्टेबिलिटी भी बाकी बचा है, न्यूमेरिकल। ग्रेन स्टेबिलिटी न्यूमेरिकल विष्णु सर करा रहे हैं बेटा? हाँ जी सर। ओके, ऑल राइट, ठीक है, मैं सर से पूछ लेता हूँ। देन व्हाट आई डू इज बेटा, आई विल शेड्यूल दीज क्लासेस ऑन आइदर आई शेड्यूल इट इन द पीएम सेशन। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के बाद मैं पीएम सेशन एक लगा दूंगा, और आई कैन डू दैट ऑन सैटरडे। सैटरडे एक दिन हमारे पास अवेलेबल है, सो वी कैन फिक्स अप दीज क्लासेस ऑन सैटरडे। ओके सर। Okay. Other subjects, beta? Other subjects? Anything else required? Any more lectures required? Okay. नहीं सर, बाकी तो हो गया। ठीक है बेटा, डन। इफ़ यू फील बाद में भी बेटा, एग्ज़ाम के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी सब्जेक्ट में हमें और लेक्चर चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स ऑल्सो, then we have the PM sessions available. We can fix up the PM sessions and have those topics covered up. And Saturday is also available to us, so we can have some classes on Saturday also. 14th is also available to us. 14 तारीख को भी हम इसे कवर अप कर सकते हैं if any particular topic is there. Okay, so shall we move to the chart numerical? अच्छो, चलें बेटा, चार्ट न्यूमेरिकल पे चलें। यस सर। Okay, all right. Let's now move into the concept of chart projections. Many a times we get a question in our paper related to construction of a Mercator chart. They give us a particular area, coordinates of a particular area, and we are required to prepare a Mercator chart for that area on our answer sheet. So this question is basically not to test our knowledge of chart making, but to test our concepts related to the chart projections. Not that we will be able to make the charts once we understand it, but it will just test our knowledge, and it will tell the examiner that the concept related to the chart projections are clear in the student's mind.
So let's see what are the basics involved in a chart projection, chart construction. A Mercator chart is based on two scales. We are aware there are two different scales on a Mercator chart. Let's have a look. You see a small part of the Mercator chart on the screen now. You see a scale on the horizontal side, the bottom horizontal scale at the bottom of the chart, which is encircled. And you see another scale, which is the vertical scale on the right side of the chart. Again, it is encircled. So the scale at the bottom, the horizontal one, is known as the longitude scale. The scale, vertical scale on the right side of the chart is known as the latitude scale. So these are the two scales on which the Mercator chart is based. Now, both these scales are different from each other. That means 1 minute of latitude will be different from 1 minute of longitude. They are not same. It is a property of the Mercator projections that these scales are different. To go a little bit more deeper into the concept of latitude and longitude scale, the longitude scale which you see, 1 minute of longitude or 1 degree of longitude, is constant over the entire chart. So you go to any part of the chart, the length of 1 minute of longitude or 1 degree of longitude will remain same. It is not going to change. Now, with respect to the latitude scale, it is not so. One, which we just now discussed, latitude scale is different from longitude scale, means 1 minute of longitude will not be equal to 1 minute of latitude. Secondly, even after this, the 1 minute of latitude is not even of a constant length over the entire chart. Means if you move to different locations on the chart, the length of 1 minute of longitude or 1 minute of latitude or 1 degree of latitude is going to vary. How does it vary? The latitude scale increases when we go in higher latitudes, or the latitude scale increases while going towards the pole. So as you move away from the equator and you go towards the poles, you will see the length of 1 minute of latitude keeps on increasing. Now we have a relationship between these two scales, that is the latitude scale and longitude scale. The Mercator projection is based on this relationship. So this relationship is the latitude scale is equal to longitude scale divided by cos of latitude. So as is clear from this formula also, you see as the latitude keeps on changing, the latitude scale also changes. So this relationship is a very important relationship to understand the construction of a Mercator chart. So this should be memorized. Very important formula as far as the chart projection basics or chart projection numericals are concerned. So in this formula, if you have the latitude scale, using the formula, you can find what will be the longitude scale and vice versa. If the longitude scale is known to you, the latitude scale can be easily calculated. So we will use this formula in the coming numerical. The application will become clear in the mind then. Clear up to here, beta? Any doubts? No, sir. Okay.
I would recommend you note down this formula. Latitude scale is equal to longitude scale divided by cos of lat. We will be using it. Now, before we go into the numerical, let's first understand some of the basic definitions. They really helps us in understanding the concepts as well as in the numerical also. The first definition which we have is the definition of meridional parts, in short also known as MP, Mike Papa. So what are these meridional parts? It is the length of the meridian between the equator and that particular latitude. Meridional parts are reference to latitude. Every latitude will have a meridional parts value. So it is the length of the meridian between the equator and that latitude measured in units of longitude scale. Or you can also explain it in a different wording, in a different way. That is, the number of times 1 minute of longitude can be laid between the equator and that particular latitude. So the number of times you can place 1 minute of longitude from the equator up to a particular latitude is what we call as meridional parts for that particular latitude. How do we obtain them? We have a meridional parts table in the Norris nautical tables. So they can be picked up from there. You enter the table with latitude, and for every particular latitude, degrees and minutes, they will give you the meridional parts for that particular parallel. Now moving on to the second definition, that is DMP. It is difference of meridional parts. The DMP, or difference of meridional parts between two parallels, is the length of the meridian between the two parallels measured in units of longitude scale, or you can have a different wording again as we had in meridional parts. This was the first definition explained in one way. You can also explain it the number of times 1 minute of longitude can be laid between those latitudes. This is known as the DMP, difference of meridional parts. The third definition which comes ahead is the natural scale of the chart. Natural scale of the chart is the ratio of distance between 2 points on the chart and the actual distance between them on the Earth surface. So that is the natural scale of the chart. So are these clear, beta? Shall we move on to the numerical now? Okay, all right. So let's move on. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. सर ये एमपी और डीएमपी का कोई लाइक डायग्राम है, उससे अगर पता चल जाएगा एक बार. Meridional parts diagram. जस्ट डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन करना होगा, लाइक अपनी वर्ड्स में भी कर सकते हैं ना उसके बाद. तो इसकी कोई डायग्राम तो नहीं है बेटा एज सच, बट इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन तो ये चीज क्लियर हो जाएगी माइंड में. लेट्स ट्राई. कैन यू इमेजिन द ग्लोब?
Yes, sir. Let us say we have a model in front of us. अब उस globe में let us say we are looking at the Greenwich meridian. Okay, Greenwich meridian. Greenwich meridian पे एक point होगा which is on the equator, 0 degree latitude, right बेटा? Okay. Let's make a mark on that point, and now let's go north of it. So when you go north of it, you can go up to 10 degrees, 20, 30, 40. Let's say we go up to 40 degrees north. Okay, और हमने एक marking वहां पे बना दी. So we can see the Greenwich meridian now from 0 degrees to 40 degrees. ये meridian जो है ये हमें दिखाई दे रहा है. 0 डिग्री पे भी एक मार्किंग है, 40 डिग्री पे भी एक मार्किंग है, राइट बेटा? Yes, sir. ओके, अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि ये जो 0 to 40 की आर्क है, अगर इसमें मैं मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड रखूंगा, मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड, क्या रख रहा हूं? मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड. लेट अस से मेरे पास छोटे छोटे पीसेस हैं, ईच पीस इज 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड. सो इफ आई प्लेस इट ऑन द इक्वेटर, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड कैन आई प्लेस अप टू 40 डिग्री नॉर्थ? ये बताओ. Like 1 minute is 60 degree, 60 degrees का हो जाएगा ना? It will be 40 into some 1 minute into 40 degrees होगा. 60 minutes, sorry. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है. कितना आ गया आंसर? It will be 20. It will be 60 degree into 20, 60 degree into 40 होगा ना? Very good बेटा, 60 into 40, you are 100% correct. 2400. Very good. So we will be able to place 2400 minutes of latitude. Let us assume कि एक latitude, minute of latitude is a brick. So we will be able to place 2400 bricks and then we will reach up to 40 degrees north. ओके बेटा, ये हमें समझ में आ गया कि अगर हम मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड को प्लेस करें तो इक्वेटर पे प्लेस करते करते 2400 मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड हमने प्लेस किए तो हम 40 डिग्री पे पहुंच जाएं. अब सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज करते हैं. हमने अभी देखा कि मर्केटर चार्ट पे 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड एंड 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड ये एक जैसे नहीं होते. Yes, sir. इनकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग होती है. 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड छोटा हो सकता है, 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड बड़ा हो सकता है. दैट्स पॉसिबल. मर्केटर चार्ट पे दोनों की डायमेंशन अलग अलग होती है. ओके, इट इज समथिंग लाइक कि अगर कोई घर बन रहा है, आप उसमें नॉर्मल ब्रिक्स अगर लगाओगे उनका साइज छोटा होगा, पर आजकल वो सीमेंट ऐश वाली ब्रिक्स आती हैं, ऐश ब्रिक्स. हैव यू सीन बिगर वंस? Yes, sir. वो अगर रखेंगे तो उनका साइज अलग होगा. तो अब अगर मैं मिनट्स ऑफ लैटिट्यूड नहीं रख रहा हूं, यहाँ पे मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड को रखूं, मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड को, तो कितने मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड 40 डिग्री पैरेलल तक आ पाएंगे? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेरिडियनल पार्ट्स ऑफ 40 डिग्री लैटिट्यूड. Okay. Okay, so this will be lesser than this will be greater than the DLAT. ये 2400 से ज़्यादा नंबर आएगा आपके पास. नंबर ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड जो है ना ये बड़ा होता जाता है, पर 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड सेम डायमेंशन का रहता है. सो दिस वैल्यू, minutes of longitude which can be placed between the equator and a particular latitude is what we call as meridional parts. A meridional part is nothing but 1 minute of longitude. उसी को हम meridional part बोलते हैं. Okay. Thank you. Okay बेटा, great. So let's now see a numerical which is based on this concept. So let's go. With these basics clear in our mind, let's now have a look at a sample numerical related to Mercator chart construction. Questions like these, they appear in the exams. So let's see.
The question says, construct a Mercator chart from 28 degrees north to 32 degrees north and 015 degrees west to 020 degrees west using a scale of 1:1000 in latitude 30 degrees north. So we are required to construct a Mercator chart for this particular area defined by these coordinates. They have given us the scale of the chart. Now, whenever the scale of the chart is given to us, it will also be it will always be based on a reference latitude. Because you see, as we just now saw, 1 minute of latitude keeps on changing as we go away from the equator. So whenever scale is given, it is referenced to a particular latitude. Like in this question, it is referenced to 30 degrees north. Most of the time you will see that the scale is referenced to the mid latitude of the area which the chart is covering. So you can see here 28 to 32. This 30 degree north is exactly midway, but it is not something which is mandatory. This can be any particular latitude. Now let's see how do we attempt these kind of questions. Now in step 1, we have to first calculate the length of 1 minute of longitude on the chart. All these questions related to Mercator projections, always remember that you have to find out the length of 1 minute of longitude on the chart. What will be the length of 1 minute of longitude? Once we have this 1 minute longitude length, we will be able to solve these questions. Why we are interested in length of 1 minute of longitude is, you see 1 minute of longitude is of a fixed length. So you can go in any part of the chart that 1 minute of longitude will be of a fixed length. So it gives us a very convenient unit to construct the chart. We cannot use latitude here because if you measure the length of 1 minute of latitude, it keeps on changing. At the bottom of the chart, it may be something else. At the top of the chart, it may be something else. So it doesn't help us much to construct the chart. Now, how do we calculate the length of 1 minute of longitude? So for this, let's see. We know 1 minute of latitude on the earth is equal to 1 nautical mile, which is equal to 1852.3 meters. It's a fixed length. We know 1 minute of latitude is 1 nautical mile. That is the definition of a nautical mile. And it has a fixed length of 1852.3 meters. Let's convert it into millimeters. Millimeters is a convenient unit to construct the chart on our answer sheet. So it converts to 1852300 millimeters. Now, 1 minute of latitude on the chart will be how long? We can easily find this out. Once you know the length of 1 minute of latitude on Earth, you can easily scale it down and find what will be its length on the chart. So it will be 1852,300 divided by the scale of the chart. So scale basically tells us what is the ratio of a particular distance on the Earth's surface and on the chart. So we have used the scale here. It will give us the length of 1 minute of latitude on the chart. Now from this, we can easily find out 1 minute of longitude. You remember the formula? The formula was latitude scale is equal to longitude scale divided by cos lat. So we have used the same formula here. We had the latitude scale, 1 minute of latitude was this much. We multiplied it, this value 1852,300 divided by the scale. We multiplied it with cos of latitude
to get 1 minute of longitude. So same formula has been used here, and we have converted the latitude scale into the longitude scale. Now 1 minute of longitude is also called as 1 meridional part. So once we calculate this, we will have the length of 1 minute of longitude as well as the length of 1 meridional part. Meridional part is nothing but 1 minute of longitude. You can also understand it in this particular way. The gap or area between two meridians is divided into 60 parts. So every part is 1 minute of longitude. Between any 2 degrees, let us say 000 and 001 meridian, there are 60 minutes of longitude. So it is divided into 60 small parts. Now this 1 minute of longitude is known as 1 meridional part. So using this, we can find out the length of 1 meridional part or 1 minute of longitude. This also is a very important relationship. Now, if you want, you can derive it in these 3 steps in your answer sheet. But if you are running short of time, you can use this formula straight away for your calculation. It can be memorized like this, and you can straight away use it whenever required, and you can calculate the length of 1 minute of longitude. So beta, is it clear up to here? Any doubts up to here, beta? No, sir. Okay. Let's move ahead. Okay, so again that formula is repeated here. 1852,300 into cos of latitude divided by the scale. Now, what latitude should we be using here in this formula? The latitude which is used here is the same latitude on which the scale is referenced. So you see in this question, the scale is referenced to latitude 30 degrees north. So this is what we will be using in the formula here. So if you put these values, 1852,300 multiplied by cos of 30 degrees, which is our latitude, and divided by the scale, which is 1,000,000, you will get this value of 1.604 millimeters. So we get a value on this particular chart. 1 minute of longitude is going to be 1 meridional part. It will be 1.604 millimeters. So proceeding further from there, 1 minute of longitude on the chart is equal to 1. सर पीछे वाली स्लाइड पे एक बार करेंगे क्या? Okay, beta. Okay. सर ये वाला पार्ट मिस कर दिया. कौन सा लैटिट्यूड लेना है, वो वाला पार्ट बस मिस कर दिया. Okay. In this beta, in this particular slide. Yes, इसके पीछे वाला जो स्लाइड है जिसमें 1852,300 into cos lat, उसमें लैटिट्यूड कौन सा लेना है वो बता देना एक बार प्लीज. Right, beta, right. Just a minute. Can you see the slide now? Yes sir, I can see. Okay. अब बेटा हमने देखा 1 minute of longitude is equal to 1 meridional part. इसका फॉर्मूला हमारे पास आया 1852,300 into cos of latitude divided by the scale.
scale or the ratio. So the latitude which is to be used here is the same latitude on which the scale is referenced. So अगर आप क्वेश्चन में देखो, उन्होंने बोला है यूजिंग ए स्केल ऑफ 1:1000000 इन लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ. तो हमने ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ही अपने फॉर्मूले में यूज करना है. ओके सर, ओके सर. अगर यहाँ पे लैटिट्यूड नहीं दिया हुआ है, सपोज सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर मर्केटर चार्ट, दोनों लैटिट्यूड दिए हुए हैं, लॉन्जिट्यूड दिए हुए हैं, यूजिंग स्केल इतना ही दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा ना? नहीं बेटा, वो क्वेश्चन की सेंस नहीं बनती है, बिकॉज मर्केटर चार्ट में व्हेनेवर स्केल इज गिवन टू यू द रेफरेंस लैटिट्यूड शुड आल्सो बी गिवन. अदरवाइज स्केल की सेंस नहीं बनती है बेटा. स्केल हैज टू बी रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड. ठीक है सर, ठीक है, ठीक है. सो इन ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल ऑलवेज सी, जहां कहीं भी स्केल दिया होगा रेफरेंस लैटिट्यूड जरूर होगा. ओके सर, ओके. अब मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट भी बता देता हूँ. बाय चांस अगर ऐसा होता है, अभी तक आया नहीं है ऐसा सवाल, बट लेट अस से यू गेट ए क्वेश्चन इन द एमएमडी जिसमें ये लैटिट्यूड मेंशन्ड ही नहीं है. अब ये बात तो सही है कि मेंशन्ड होना चाहिए, बट अब वहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. आपने वेट किया कि कोई करेक्शन आएगी, कोई करेक्शन भी नहीं आई. तो ऐसे केस में व्हाट वुड बी द बेस्ट वे अहेड? ऐसे केस में बेटा यू जस्ट राइट ए रिमार्क. अपने सोल्यूशन के ऊपर एक रिमार्क लिख दो. सिंस द रेफरेंस लैटिट्यूड इज नॉट मेंशन्ड, we are assuming this latitude as our reference latitude and solving it. So ये आप अगर ऊपर लिख दोगे, the paper checker will immediately understand that this was not given in the question. You have assumed a value and you have solved it, and you will get full marks. Okay. So we can write the difference of this latitude also, ना 28 डिग्री नॉर्थ. सपोज 30 डिग्री नहीं दिया हुआ तो दोनों का डिफरेंट मीन निकाल के उसका लैटिट्यूड ले लेंगे ना? Yes, that's right. अब लैटिट्यूड अज्यूम कौन सा करोगे आप? अज्यूम करने के लिए बेस्ट लैटिट्यूड होता है द मीन लैटिट्यूड ऑफ द एरिया विच द चार्ट इज कवरिंग. जैसे इस केस में 28 to 32 का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मीन लैटिट्यूड जो है उसी को अपने रेफरेंस स्केल पे अज्यूम किया जा सकता है. नॉर्मली जो चार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि जो भी एरिया चार्ट कवर कर रहा है उसका मीन लैटिट्यूड ही रेफरेंस लैटिट्यूड लिया जाता है. ओके. ओके बेटा, क्लियर? यस सर. राइट बेटा. सो अब हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है? वी नाउ हैव 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड डायमेंशन. हमें पता चल गया कि ये जो चार्ट हमारा बनेगा उसमें 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड विल बी 1.604 millimeter. So this is what we know now. Now with this information we can easily construct the chart. So let us see the construction now. So proceeding further from there, 1 minute of longitude on the chart is equal to 1.604 millimeter. Now using this, we can easily calculate what will be the length of 1 degree of longitude. 1 degree consists of 60 minutes. So it will be 60 multiplied with 1.604. 1 minute was 1.604 millimeters. You multiply it with 60, you get the length of 1 degree of longitude, which comes out to 96.3 millimeters in our particular case. Once you have this length, 1 degree of longitude, you can easily draw the meridians on the answer sheet now. So let's draw the meridians. I have first of all drawn this meridian and named it as 20 degrees west. Now the area of the chart which I want to draw, the one of the extremities is 20 degrees west, so I have considered this longitude as 20 degrees. Now I keep a gap of 96.3 millimeters and I draw the second meridian.
The second meridian will obviously be 19 degrees west. See, the right side always is the easterly direction. So when you are going in the easterly direction, the westerly longitude would decrease. So the next meridian which we have is 19 degree west. Again, from this meridian, I can draw a length of 96.3 millimeters, and that gives me a point from where I can draw 18 degree west meridian. So we have the 18 degree west meridian on the chart, on the plot. And continuing further, again 96.3 millimeters, 17 degrees west, again 96.3 millimeters. We get the next meridian, 16 degree west, and again 96.3 millimeters, and we get the 15 degree west meridian. So this was the area, the coordinates which we were required to cover, 15 degree west to 20 degree west. Once the meridians are there, based on the longitude scale, which is constant, that is why you see the length between any two meridians is same in all parts of the chart. Now we know the parallels which we need to draw, that is 28 degrees north to 32 degrees north. So my bottommost parallel will be 28 degrees north. So we can now easily draw the bottommost parallel here, 28 degrees north. So let's plot it. You have the 28 degrees north parallel shown in the diagram now. So all the meridians are plotted. The bottommost parallel 28 degrees north is plotted. Now moving further in the question, we now need to draw the parallel of 29 degrees north. Now to draw the parallel of 29 degrees north, I need to know how much distance I need to keep between 28 degree north parallel and 29 degree north parallel. So beta, can anyone guess now how will we find out where the 29 degree north parallel of latitude lies? How many millimeters shall we go above 28? So does anything come to your mind? सर लॉन्जिट्यूड स्केल इनटू sec of lat या फिर डिवाइड बाय cos of lat. Okay, so ये आपने फॉर्मूला दिया था ना, लैटिट्यूड स्केल इक्वल टू लॉन्ज स्केल डिवाइड बाय cos lat. right beta, right. सर ये नॉरिस टेबल से देख सकते हैं क्या? नॉरिस टेबल से क्या देखेंगे बेटा? DMP. वेरी गुड. सो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, दैट्स राइट. नॉरिस टेबल में जाएंगे, डीएमपी देखेंगे, और फिर डीएमपी से कैसे पता चलेगा हमें? फॉर टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स हर बार देखना पड़ेगा. ओके, सो दैट, यस यू आर राइट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Does anything more come to the mind? Okay, all right. लैटिट्यूड के लिए डीएमपी दिया हुआ है ना, तो वो दोनों का जैसे 28 डिग्री है 29 डिग्री के बीच में देख लेंगे कितना है मेरिडियनल पार्ट है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे लैटिट्यूड स्केल से, और जितना रहेगा उतना ले लेंगे, उतना एमएम ले लेंगे. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ग्रेट. उसको लैटिट्यूड स्केल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, हमने तो मेरिडोनियल पार्ट की डायमेंशन निकाल ली है ना. 1 मेरिडोनियल पार्ट इज हाउ मच, 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड इज हाउ मच. So we can simply multiply it with that and find out the gap between 28 and 29. Let me show you. Yes, sir. Right, you are right, beta. Let's do it now. Need to know this is this in millimeters. So how can we obtain this?
I am aware of what is the length of 1 minute of longitude. I have already calculated it. What is the length of 1 minute of longitude is known to me. Now, how to find out the length between 28 degrees parallel and 29 degrees parallel? We have a relationship. The difference of meridional part, or in short DMP, between two parallels of latitude is the number of times 1 minute of longitude can be placed between the two parallels is the DMP between them. We had seen the definition of meridional parts. One meridional part is basically 1 minute of longitude. And we had also seen the definition of DMP. So DMP between two parallels is basically how many times 1 minute of longitude can be placed between the two parallels of latitude. So we are going to use this concept to find out where to draw my 29 degree parallel. So what we are going to do is we will find out the DMP between 28 and 29. Now, how do we find the DMP? From the meridional parts table in the Norris table. So from the meridional parts table, if you check the meridional parts of 28, that is 740.18. And if you check the meridional part for 29 degrees parallel, it is 1808.09, giving you the DMP as 67.91. So this tells us that between 28 and 29, you can place 67.91 minutes of longitude. This is the definition of DMP. So one meridional part is equal to 1 minute of longitude. So distance between 28 and 29 is equal to 67.91 minutes of longitude. And we had already calculated 1 minute of longitude in this particular diagram is 1.604 millimeters. So we multiply both of them to find out the distance, and the distance comes out to be 108.9 millimeter, or in other words 10.89 centimeters. So this is the distance which you need to keep between 28 degree north parallel and 29 degree north parallel, 108.9 mm. So we mark off this 108.9 millimeter of distance, and after marking this distance, we can now draw the parallel of latitude of 29 degrees north. Similarly, we can now find out what is the distance between 29 degree and 30 degree north parallel. Now keep in mind that the difference between the parallels of latitude will not be constant, will not be fixed, as it was in the case of meridians or longitude. Between every two longitudes, the distance was 96.3 millimeters. But this does not apply, or this does not happen with parallel of latitude. So as we are aware that on a Mercator chart, 1 minute of latitude keeps on becoming bigger and bigger. So the gap between the parallels of latitude also keeps on increasing as we move away from the equator towards the pole, or as we go into higher latitudes, the gap between the parallels keeps on increasing. So between 28 and 29, we had a gap of 108.9 millimeters. Between 29 and 30, it will not be the same. It will be different because 1 minute of latitude keeps on changing. So how do we find that gap between 29 degrees and 30 degree parallel? We use the same method. We find out the DMP, difference of meridional parts between them. And this DMP now comes out to 68.58. 1808.09 is the meridional parts for 29 degree parallel of latitude.
1876.67 is the meridional parts for 30° parallel of latitude, and their difference comes out to be 68.58. Now we know one meridional part is equal to 1 minute of longitude. So the gap between 29 and 30 is basically 68.58 minutes of longitude. 1 minute of longitude is already calculated as 1.604 millimeters. Multiplied by the DMP gives us the gap or distance between 29 and 30° parallel, and it comes out to be 110.0 millimeters. You see, it has increased from 108.9 millimeters. The distance has become more. So now using this value, 110 millimeters, we can now mark off the parallel of latitude of 30 degrees north. Similarly, following exactly the same procedure between 30 and 31, we get the DMP between them. Meridional parts of 31 degree, 1945.96, meridional parts of 30, 1876.67, gives the DMP 69.29. So that means 69.29 minutes of longitude can be placed between 30 and 31. So we know 1 minute of longitude is 1.604 mm. This gives us the gap between 30 and 31 as 111.1 millimeters. So again, you can see the distance between 30 and 31 has increased now from 110 to 111.1. So we can now measure this much of distance, 111.1, and keeping this distance, we can now mark off the parallel of latitude of 31 degrees north. Exactly in the same way, we find out the gap between 31 and 32. The DMP is 70.02. Multiplied by 1 minute of longitude, length 1.604. It gives us the length between, or the gap between 31 and 32 as 112.3 millimeters. So keeping this gap between 31 and 32 as 112.3 millimeters, we can now mark off the parallel of latitude of 32 degrees north. And this completes the construction of our chart graticule for the required coordinates. Okay, so that completes our question, beta. This was what was required, making a chart graticule for this area. Now, one doubt which may come in your mind is, if you see the dimensions are such that it will not fit on your answer sheet. The difference between parallels of latitude is almost 10 centimeters plus. So you need about 40 centimeters up and down, and you need about 50 centimeters width, which will not be possible in your answer sheet. So in this case, you can make a diagram like this, and you can show the distances in this particular way, and you can write down cannot be made to scale because of the limitation of the answer sheet. So examiner will know that you have calculated the distances, and this reference diagram will give you marks. So these are the questions, beta, which are based on chart projection numerical. So any doubt at any step, beta? सर इसमें कुछ वेरिएशन है क्या सर, मतलब ऐसे ही आता है या फिर कुछ वेरिएशन भी है? Most of the time it is this way only, beta. Most of the time. कभी-कभी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है. Like sometime they may give you two positions and they may tell you what will be the length of the rump line between them. Okay. So है ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन. So what you have to do is, जो आपको दो पोजीशन दे रखी गई हैं, आपने उन्हीं दो पोजीशन के साथ चार्ट ग्रेटिक्यूल प्रिपेयर करना है. So once you know the graticule, you know the width of the chart, you know the length of the chart. So you just have to apply Pythagoras and find the hypotenuse now.
तो आपके पास रंब लाइन की लेंथ आ जाएगी. दिस इज द ओनली वेरिएशन इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय स्केल देन. मल्टीप्लाई बाय स्केल, या दैट्स राइट. एंड सर जो फॉर्मूला आपने बताया था सर, जो लैटिट्यूड स्केल इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूड स्केल बाय कॉस ऑफ लैट, तो सर ये मतलब हम नूरिस टेबल यूज क्यों की सर? मतलब अगर लैटिट्यूड में फ्रॉम इक्वेटर इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पोल, तो डायरेक्टली लॉन्जिट्यूड स्केल डिवाइड बाय कॉस ऑफ लैट अगर करते तो क्या नहीं आता क्या? स्केल किस लिए है वो? भूल गया. Your doubt is that we have the formula. Why are we using the Norris table then? Why are we using the DMP then? करेक्ट सर. Okay. बेटा ये जो फॉर्मूला है ये हमें सिर्फ 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड की डायमेंशन दे सकता है. वो तो हमें पता चल जाएगी इससे. जैसे इस क्वेश्चन में हमें पता चली 1.607 आई थिंक इट वाज. सो हमें पता चल गया कि 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड 1.607 है. अब उससे मेरिडियन तो आप बना लोगे क्योंकि मेरिडियंस के बीच में हमें पता है 60 मिनट्स ऑफ लॉन्जिट्यूड आर देयर, तो मेरिडियंस तो सारे बन जाएंगे. बट व्हेन यू कम टू लैटिट्यूड्स, now you see we don't know what will be the gap between 20 and 28 and 29. हमें 1 मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड की डायमेंशन तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि 28 और 29 के बीच में कितने मिनट ऑफ लॉन्जिट्यूड आएंगे. दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द डीएमपी. ओके सर. ओके ओके, ऑल राइट बेटा. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. अब बेटा स्पेशली फॉर नवंबर बैच कैंडिडेट्स, आपको बेटा मैं एक ना शीट अभी भेजूंगा. सो इसमें कुछ एक थ्योरी क्वेश्चंस हैं. मैंने ये थ्योरी क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है. दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन विच अपीयर इन आवर पेपर. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 में कभी कभी एक थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया जाता है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन बुक. मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ ये कौन से पेज पे कौन से पैराग्राफ में दिया गया है वो भी लिख दिया है. सो दिस विल गिव यू ए लीड इनटू हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी क्वेश्चंस. इफ यू प्रिपेयर दीज, I would say there is a 90-95% chance that you are going to get a similar question in your paper. So ये मैं एक आपके साथ शेयर करूँगा. Please go through these topics before your exam. And अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक में डाउट आता है, you can share with me over WhatsApp. So I will try to solve it there. And if required, then I can have a class with you. Okay. So we can have it tomorrow if you need. We can have it on Monday evening or Tuesday evening, whenever you need. So that can be done. So just give me a minute. मैं अभी इसको chat पे ही post कर देता हूँ बेटा. Give me a minute. सर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं क्या पास्ट के? बेटा हमारे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, जो क्वेश्चन पेपर हम आपको देते हैं, they are picked up from the MMD past papers only, no separate papers. Even this time जो question paper मैं आपको दूंगा, all the questions will be from past papers only. सर ये चार्ट वर्क भी एग्जाम में अभी जो होंगे इंटरनल, उसमें चार्ट वर्क भी होगा? हाँ बेटा उसमें चार्ट वर्क भी है. एंड उसके लिए मुझे आपसे पूछना भी था, विच चार्ट वुड यू लाइक द पेपर ऑन बेटा? अदर देन 5048 कोई भी एक चार्ट आप बता सकते हो. सर जैसे आपने ग्रुप में फोटो भेजी है, सेम वैसे टेबल अरेंज करना है क्या नवंबर बैच में एग्जाम के लिए? No, I didn't get you बेटा. Can you ask again? सर जो नवंबर बैच ग्रुप में आपने फोटो शेयर किया है, सेम वैसे टेबल अरेंज करना है एग्जाम के लिए? हाँ बेटा वैसे ही अरेंज करना है. सर अगर वैसे टेबल ना हो तो बेटा कैसा भी टेबल होने दो, आप जहां भी बैठे हो आपने अपनी मोबाइल को ऐसे रखना है that it captures the view wherever you are sitting.
ओके सर, बैक में होगा तो फिर लैपटॉप नहीं आएगा सामने, बिल्कुल पीछे रख दिया था। हाँ, थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा ना बेटा, स्टारबोर्ड क्वार्टर और पोर्ट क्वार्टर। ओके ओके, सर अगर एग्जाम्स ना दे पाऊँ अगर तो उसका क्या प्रोसीजर है बाद में देने का? जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अभी बताता हूँ मैं, 1 मिनट। Okay, so beta, what were you asking? What was the doubt? सर अगर अभी एग्जाम्स नहीं दे पाते तो बाद में देने का क्या प्रोसीजर है फिर? बेटा मैं रिकमेंड करूँगा, आई हाईली रिकमेंड कि तुम अभी एग्ज़ाम दे दो। ओके, बिकॉज बाद में ये बहुत ट्रिकी हो जाएगा। बाद में बेटा तुम्हारा केस ना ओपन रह जाएगा ये, इफ़ यू डोंट गिव एग्जाम्स नाउ द केस विल बी ओपन एंड बाकी बच्चे सारे पास आउट हो जाएंगे एंड यूअर्स विल बी द ओनली वन विच इज़ पेंडिंग। एंड सिंस इट इज़ ऑन uploaded online now, e-governance, it may happen that the e-governance system may lock the batch. Okay, so usually हम ये बोलते हैं कि अगर कोई बहुत emergency आ जाए and you are not able to give the exams, then you can sit with the next batch. अगले महीने जो एग्ज़ाम होंगे उनके साथ बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो उससे ज़्यादा अगर डिले करोगे तो फिर बेटा उसके बाद ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ई गवर्नेंस, दैट में लॉक एंड द सर्टिफिकेट में नेवर बी जनरेटेड। ओके सर, ठीक है, फिर नेक्स्ट बैच के साथ दे दूंगा मैं। इस बार नहीं दोगे एग्जाम नहीं पक्का? सर, इस बार तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। यू हैव एन इमरजेंसी? हाँ जी सर, थोड़ा है, काम है। ओके, आई हाईली रिकमेंड दैट इफ पॉसिबल यू गिव इट विद दिस बैच बेटा। ठीक है सर, जितने एग्जाम्स इस बार हो पाएंगे तो दे दूंगा, बाकी के मैं नेक्स्ट बार दे दूंगा फिर। What I can do is, if it is a matter of 1 or 2 exams, we can schedule a re-exam for you. अगर आपको कोई डेट ऐसे क्लैश कर रही है with something important, then we can have your exam on Saturday or maybe next week, Monday, Tuesday somewhere. हाँ सर, है तो ऐसे 2-3 दिन की बात है, तो 2 दिन तो है ही, नहीं तो तीसरे दिन का होगा तो फिर वो बाद में दे दूंगा, तो वो री एग्जाम दे देंगे फिर। And are you busy for the full day बेटा? हाँ जी सर, फुल डे। Morning, evening, nothing is available? जैसा होगा सर फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, हो जाएगा ना फिर शेड्यूल। If you can tell me in advance, okay, अगर मुझे आप कल इवनिंग तक बता सको that what slot is available to you if you are busy in the morning or evening, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ बेटा, I can schedule the exam that way so that you are able to sit. ठीक है सर, ओके ओके, मैं कल बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि एक बार अगर आपका एग्जाम रह जाता है ना, then your case goes into pending. ठीक है सर। ओके, सो आई डोंट वांट कि अब ये 3 महीने का एफर्ट तुमने डाला है, द एफर्ट शुड नॉट गो वेस्ट। ओके, सो अब तो जितना जल्दी सर्टिफिकेट निकाल लो उतना अच्छा है बेटा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये आज जो कराया सर आपने प्रोजेक्शंस एंड ये स्टार वाला, सर इस पे कुछ क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे सर? प्रोजेक्शन के क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है बेटा, मैं डाल देता हूँ। मेरे पास आई थिंक 2-3 सवाल होंगे, सो लेट मी सी, आई विल पुट इट। सर एग्जाम 12 बजे के बाद कर सकते हैं रिटर्न? 12 बजे के बाद? ये सर, 1 मिनट बेटा, लेट मी फर्स्ट गिव यू द ड्राइव लेसन प्लान्स।
ओके सो बेटा इफ़ यू हैव ए लुक इन द चैट, तो मैंने वहाँ पे एक PDF डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है. सो इन दैट PDF डॉक्यूमेंट यू विल सी द क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस विच कम इन अवर एग्जाम. टोटल 15 सवाल हैं वहाँ पे, और एक दो सवाल जिनके आंसर्स बुक में अच्छे से नहीं दिए गए हैं वो मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं. एंड रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस कौन से पेज पे वो मेंशन्ड है, दैट इज आल्सो गिवन देयर. सो जस्ट गो थ्रू दीज बिफोर योर एग्जाम्स, so that will help you prepare better. Okay, now the next is can we have the exam in the afternoon? Okay, ये बेटा afternoon में I'm not sure whether I'll be able to do it. So, but I'll keep in mind. You all of you want the exam in the afternoon, beta? So 10 o'clock कर लो फिर. 10 o'clock in the morning? Yes, sir. 10 o'clock is better, sir. 10 o'clock कर लो सर प्लीज. 10 o'clock. सर 10 o'clock कर लीजिए सर. अभी तो सर 8:45 को तो उठते हैं सर अटेंडेंस लगाने के लिए. 10 to 3 कर लो सर. Okay, 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 okay. 10 o'clock. 10 to 1:45. हाँ, हमारा सेशन 1:45 तक जा सकता है. ठीक है बेटा. सर एक और क्वेरी थी. बोलो तो जैसे एग्जाम देने के बाद जब जो आपका लिंक रहता है, बाय एनी चांस अगर वो मिस हो जाए या सबमिट ना हो पाए, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है सर? आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसी वक्त सेम टाइम? हाँ बेटा, देन यू हैव ए बैकअप. यू कैन सेंड इट बाय मेल. अगर आपका वो लिंक नहीं जनरेट हो पाता है और यू आर नॉट एबल टू अपलोड ऑन द लिंक, तो आपने बेटा इसको मेल कर देना है. यू कैन मेल इट टू मी. ओके सर, वेल कॉपी. ओके, मेरी मेल आईडी जो है वे मैं टाइप कर देता हूँ. बट इफ़ यू मेल इट टू मी, मेल इट विद इन दैट टाइम पीरियड. जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, अपलोडिंग के लिए आपको 20 मिनट्स के आसपास का टाइम मिलता है. सो विद इन दैट टाइम यू शुड मेल इट. यस सर, अफर्मेटिव. विद इन द allotted टाइम ओनली. एंड मेल करने के बाद बेटा व्हाट्सएप पे मुझसे फॉलो अप कर लेना. जस्ट टेल मी दैट यू हैव मेल्ड इट टू मी. सो मैं उसको जो भी फैकल्टी मेंबर को वो चाहिए उनको फॉरवर्ड करूंगा. And one more thing, sir, like the internet connection, because it's sometimes freezing. Because कभी-कभी तो मेरे को आपकी वीडियो भी फ्रीज हो जाती है बीच-बीच में. तो in that case, do we have to inform every time it goes like that or no? Beta, see, if it is a short duration interruption, let's say up. No, it's just like a short duration only, maybe a minute or 30 seconds sometimes. That's fine, beta. That need not be. Bandwidth issues only. Otherwise, it's okay. If you can recover within a couple of minutes, that should not be an issue. Because we don't have to do anything, sir. It's just because of the bandwidth, it's stopping. Yeah, it's okay, beta. Not an issue. Not required for that. Okay, sir. Okay. और बताओ बेटा. एंड सर लास्ट थिंग सेम सर, वो पुराने इंस्टीट्यूट के अगर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते तो अच्छा रहता, हम थोड़े प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते थे. But beta, question paper, as I told you, they are picked up from MMD papers only. So if you do MMD papers, the institute exams are the same. भाई एक गूगल प्ले पे ऐप है MMD एग्जाम्स करके, उसमें सारा कुछ रहता है. उसमें सारे पेपर्स होते हैं, सारे उसके MMD के सॉल्व सब कुछ होते हैं. उसमें असिस्टेंस भी मिल जाएगा. निखिल भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक शेयर कर दो, सो दैट दे कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर. ठीक है सर, कर देता हूँ. ओके ओके. सो बेटा चार्ट नहीं बताया आपने. विच चार्ट वुड यू लाइक द पेपर टू बी ऑन? कौन सा चार्ट चाहिए बेटा? एनी चार्ट. इफ यू वांट यू कैन गिव मी ऑन द व्हाट्सएप. 5056 रहने दीजिए सर. 5056? यस सर, बेटर. ठीक है बेटा. ओके, सो 5056 इज द चार्ट नंबर. So we will have the paper on 5056.
ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट था? बहुत सर ऑल्सो फॉर नवंबर बैच आप सॉरी दिसंबर बैच के लिए आप बता दीजिए कौन से चार्ट्स हमें मंगाने हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, चार्ट जो हमारे टोटल चार्ट्स हैं ना, 5 चार्ट्स आर देयर, फुल सेट हमें मंगाना है, सारे चार्ट्स का एक सेट। सो यू विल हैव 1 चार्ट ईच। ओके सर, ओके ओके, ये पूरा सेट जो है, आई थिंक मैरिनर्स ऐप पे आपको ये, आई थिंक इट कॉस्ट अबाउट 500-600 रुपीज, दैट इज अ कलर कॉपी। 599 sir, black and white. हाउ मच बेटा? Sir, 599 black and white, and colored is I think around 900 something. ओके ओके बेटा, ओके, ऑल राइट। सो रिकमेंडेड यू हैव ए कलर सेट विद यू। सर एमएमडी के अंदर तो ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है ना सर? नहीं बेटा, कलर्ड और एमएमडी के अंदर तो आपको ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल चार्ट, द बीए चार्ट। अच्छा, ओके ओके, यू डोंट गेट फोटोकॉपीज, यू गेट ओरिजिनल बीए चार्ट्स। सर ये कब से शुरू होंगी फिर क्लासेस, टिल विच डेट वी नीड टू गेट इट? वी विल बी स्टार्टिंग चार्ट वर्क फॉर दिसंबर एंड जनवरी बैच। अभी फरवरी में भी कैंडिडेट्स आएंगे कुछ, दे विल बी ज्वाइनिंग इन ऑन 15 फरवरी। सो 15 फरवरी से हमारा टारगेट है टू स्टार्ट ऑफ विद चार्ट वर्क। ओके सर, ओके। ओके, और बताओ बेटा, एनी मोर डाउट्स? सर ये स्केड्यूल में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम किसी और का रख लें, मेट्रोलॉजी का या कोई और, नेवल आर्क का सब बाद में शिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर आई कैन ओके फॉर अदर्स आल्सो। यू टेल मी विच एग्जाम यू वांट टू कीप। मैं अभी शेड्यूल खोलता हूँ आपके सामने। सेफ्टी या मेट्रोलॉजी? सर मेट्रोलॉजी का पहले कर लेते हैं, नेवल आर्क का सर सेम उसकी जगह पे कर लेते हैं। मैं अभी खोल रहा हूँ बेटा, आई विल शो यू। So you want to say Monday we want to have which one? Safety? Safety चलेगा। Monday meteorology. Monday okay, met okay। ये मैंने बेटा यहाँ डाल दिया। Thursday को नेवल आर्क का होता है। मंडे सेफ्टी कर लीजिए। मंडे सेफ्टी कर दीजिए। हाँ सर, एनीवन सेफ्टी और मेट कोई भी चलेगा। ये लो बेटा, मंडे आ गया सेफ्टी। और बताओ? और ट्यूसडे को मेट्रोलॉजी कर दीजिए सर, और थर्सडे को नेवल आर्क कर दीजिए। थर्सडे को नेवल आर्क, बाकी ठीक है सर। बाकी ठीक है, बाकी सही है सर। दैट्स ओके सर, इट्स गुड। So this becomes the sequence then. Safety on Monday, met on Tuesday, Wednesday navigation, Thursday naval architecture, and Friday cargo work, right? हाँ जी सर। Yes sir. Okay beta, all right. Let me put it here. This is the sequence you want. Okay, I'll plan with this beta. If there are no issues to anyone, then we will have this. ठीक है सर, ठीक है। Okay, और बताओ बेटा? और कुछ नहीं सर, थोड़ा डर सा लग रहा है बस। Okay. कुछ टिप्स दे दीजिए सर थोड़े से। थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। बेटा नेविगेशन तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सिंपल है। चार्ट वर्क के 3 सवाल आने हैं आपको, उन तीनों में से एक यूजुअली पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन होता है। मैंने आपको पैसेज प्लानिंग के नोट्स भेजे हुए हैं ना बेटा? नहीं सर, नहीं भेजे। नहीं सर। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा था पैसेज प्लानिंग के लिए। नो सर। ठीक है, अभी भेज रहा हूँ बेटा। आई एम सेंडिंग इट फॉर एवरीवन। मैं अभी चैट में डाल रहा हूँ उसको। गिव मी अ मिनट। डर लग रहा है यार। सर एमएमडी में तो ये सोच के बच गए कि अगली बार दे देंगे, इसका क्या होगा? बेटा डरो मत, मेहनत करो। हमेशा याद रखो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके कंट्रोल में होता है एफर्ट।
और अगर आपने एफर्ट डाल दिया है फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया, देयर वाज नथिंग एल्स व्हिच यू कुड डू, सो नो नीड टू रिपेंट, है ना। ये तो बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कब डाल सकते हैं, सैटरडे को देन? क्लियर फिलॉसफी है बेटा लाइफ की। लाइफ में कभी स्ट्रेस लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, अभी जैसे ये एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके सामने, अब पिछले 2.5 महीने में आपने जो किया वो तो हो गया, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर अगर आप आगे देख रहे हो कि ये एग्ज़ाम जो है ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है, ओवरवेलम कर रहा है, पता नहीं मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा या नहीं, तो इस स्ट्रेस को बोलो कि भाई मेरे पास अभी तैयारी करने के लिए इतना टाइम है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इतने दिन है मेरे पास। इसमें शांति से बैठ के एक चाय का कप पियो और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ कि मैंने नेविगेशन को इतना टाइम देना है, नेवल आर्क को इतना टाइम देना है, मेट को इतना, सेफ्टी को इतना, कार्गो को इतना, ये मैं इतना टाइम इसको दूंगा और उतना टाइम उस सब्जेक्ट को देते चले जाओ। आप अपनी तैयारी कर लो, तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ जाओ। पास हो गए बहुत बढ़िया, नहीं पास हुए कोई दिक्कत नहीं बेटा, ओके। तुम्हारे पास एक री एग्ज़ाम है आगे, सो नो नीड टू वरी, डोंट वरी, यू विल पास इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है, अपना एम्फेसिस और ध्यान एफर्ट की तरफ रखो। बहुत बार हम जब फंसते हैं ना प्रॉब्लम्स में, टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, अब जहाज़ पे वेटिंग इंस्पेक्शन होने वाली है या पोर्ट स्टेट, फ्लैग स्टेट कुछ होने वाला है और हम टेंशन में हैं, या सर्वे आ गए, क्लास सर्वे आ गए, आप तो ये देखो कि शांति से बैठ के क्या क्या चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, एक लिस्ट बना ली, उनमें से इतना टाइम है हमारे पास, ये किया जा सकता है, अपनी एनर्जी करने में लगा दो। वो करने के बाद अब वो चाहे पास हो चाहे फेल हो, तुम्हें उसकी कोई टेंशन ही नहीं लेनी। अगर पास हो गए तो बहुत बढ़िया, और अगर फेल हो गए, देयर वाज नथिंग मोर विच यू कुड डू, तुमने तो कर लिया ना बेटा अपने हाथ से। सो हैव दिस फिलॉसफी एंड जस्ट गो अहेड, गो विद द फ्लो। सो ये आपको आगे लेके जाएगी बेटा। सर ये प्रोजेक्शन के सर कुछ क्वेश्चंस दे देंगे सर विद आंसर? ओके, लेट मी सर्च फॉर इट बेटा, मुझे सर्च करने पड़ेंगे। आई विल शेयर विद यू, मे बी मंडे से जब हम आगे क्लासेस अटेंड करेंगे ना, मंडे लेट मी फाइंड आउट दीज क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। मैं कुछ एक क्वेश्चन निकाल लूँगा एंड वी विल डिस्कस इट, क्योंकि जो अगला वीक है ये हमारा दिसंबर एंड जनवरी बैच का इन्हीं चीज़ों में निकलेगा। नई चीज़ तो हम कुछ कर नहीं सकते, सो इन्हीं टॉपिक्स में डिटेल में जाएंगे। आई विल फाइंड आउट सम प्लॉटिंग क्वेश्चंस एज यू हैव सेड, एंड आई विल आल्सो फाइंड आउट सम मे बी ये चार्ट कंस्ट्रक्शन वाले सवाल और कुछ एक प्लॉटिंग के सवाल, ये मैं निकाल लूँगा एंड वी विल प्रैक्टिस देम। ओके सर। ओके, एक चीज पूछना था। बोलो बेटा। सर ये जो अभी टाइम टेबल चेंज हो गया ना एग्जाम का, ये फाइनल हो गया ये? बेटा ऑल गोइंग वेल, मैं तो इसी को पुश करूंगा आगे। अब इफ देयर इज नो इशू देन दिस इज फाइनल, अदरवाइज आप फिर व्हाट्सएप पे बता दोगे सर? हाँ मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा बेटा, आई विल पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप। ओके सर, अगर फाइनल हो जाए तो भी बता दीजिएगा, नहीं हो तो भी बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मैं जो शेड्यूल है ना ये आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एंड सर एक और बात, सर आप वो बताने चाहते थे क्वेश्चन के टाइप की कौन कौन से जैसे आते हैं? ओके, एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे ना हम बेटा। सो पार्ट ए में बेटा मेरे 3 चार्ट वर्क के क्वेश्चन आने हैं, एक पैसेज प्लानिंग का क्वेश्चन है। मैंने ये नोट आपको भेजा है, इस नोट में आपको ना एक पैसेज प्लान बना हुआ मिल जाएगा, पॉइंट्स वहाँ पे हाईलाइटेड हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मार्क करनी होती हैं पैसेज प्लान में। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो पैसेज प्लानिंग इससे तैयार हो जाएगा तुम्हारा। जो चार्ट वर्क है, जो हमने टॉपिक्स किए हैं बेटा, पोजीशन लाइन, पोजीशन सर्कल, ट्रांसफरिंग पीएल, ट्रांसफरिंग पोजीशन सर्कल्स, 3 पॉइंट बियरिंग, देन रेंडेवू, फिश ट्रायंगल, उन्हीं में से सवाल आते हैं चार्ट वर्क के। सो व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड इज यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम वंस। आपने एक बार प्रैक्टिस की हुई है, आई डोंट थिंक यू नीड टू डू द क्वेश्चंस अगेन। अगर आपने असाइनमेंट्स कर रखी हैं
तो प्रैक्टिस एक बार हो चुकी है. जस्ट रिवाइज द मेथड्स वंस सो दैट यू नो व्हाट इज द मेथड इज टू बी डन. अब आप पार्ट बी में आ जाओ बेटा. पार्ट बी में नंबर 4 इज जीसी कॉम्पोजिट. सिर्फ एक कोसाइन फार्मूला याद करना है. ओके, कोसाइन फार्मूला एट द मोस्ट नेपियर रूल. ये 2 फार्मूले और आपका सवाल डन है. 5 और 6 में आ जाओ. 5 और 6 में क्या है? साइड सॉल्विंग है. हमारे पास लॉन्ग बाइक्रोन, इंटरसेप्ट, एक्स मेरिडियन, पोलारिस. इन्हीं में से कोई मेथड आना है. राइट. प्लॉटिंग या स्टैगर्ड आएगी या साइमल्टेनियस आएगी. मेथड बिल्कुल एक है प्लॉटिंग का. राइट. सो कम टू पार्ट सी नाउ. पार्ट सी में 3 सवाल आते हैं. नंबर 7 इज जो हमने आज सुबह किया था, स्टार सूटेबल फॉर साइट. 8 एंड 9 जो है, इनमें या तो थ्योरी का क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी लिस्ट आपको भेजी है, आइदर द थ्योरी क्वेश्चन और यू विल हैव ए रैशनल होराइजन बेस्ड न्यूमेरिकल. ओके, नेविगेशन पेपर डन. सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी. हमारे सिलेबस में ये कॉक्ड हैट और एरर इन पोजीशन लाइन नहीं है ना सर? एरर इन पोजीशन लाइन नहीं है बेटा. एरर इन पीएल इज नॉट देयर. कॉक्ड हैट कम्स समटाइम. कॉक्ड हैट कम्स. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, कॉक्ड हैट हमने किया नहीं है ना. मैं ऐसा करता हूँ बेटा, कॉक्ड हैट मे बी वी कैन डू इट ऑन मंडे. ओके सर. ओके, मंडे को कर सकते हैं कॉक्ड हैट. एंड और यू वांट टू हैव ए शॉर्ट क्लास टुमारो? सर कल तो सर कहीं पर जाना है सर. ओके, नहीं, दिसंबर एंड जनवरी बैच के लिए तो कोई इशू नहीं है. नवंबर बैच के लिए आई एम बॉदर. दिसंबर जनवरी बैच तो मैं अगले वीक पूरा पड़ा है मेरे पास. कल ही करा दो सर. ओके, व्हाट आई विल डू बेटा, ऐसा करते हैं, तुम्हारा जो मंडे इज योर पेपर ना, सेफ्टी. लेट्स हैव इट ऑन मंडे बेटा. मंडे रख लेते हैं इसको. आपका सेफ्टी का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद एक छोटी ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद वी विल कवर दिस अप. दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट 45 मिनट्स और सो. 45 मिनट्स टू 1 hour. 1 सेशन इज रिक्वायर्ड. चलेगा सर, चलेगा मंडे को भी. ओके, या फिर एक काम और कर सकता हूं मैं. I can download the recording and pass it on to you. That's another option. ये भी चलेगा. ओके, क्योंकि मैं दिसंबर और जनवरी बैच के साथ तो कवर अप करूंगा ही इसे. So I can download the recording and pass it on to you. That also can be done. ये ठीक रहेगा सर, ये बेस्ट रहेगा. ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, we will do like that. In fact, what I will recommend is कि बेटा हम लोग जो नेक्स्ट वीक में लेक्चर्स होंगे ना, नवंबर बैच कैंडिडेट्स तो एग्ज़ाम में चले जाएंगे. दिसंबर एंड जनवरी बैच के जो लेक्चर्स होंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप इनको डाउनलोड करके नवंबर बैच कैंडिडेट्स ऑल्सो यू कीप इट विद यू. ठीक है, स्पेशली द नेविगेशन वंस, बिकॉज आई विल बी पिकिंग अप सम एग्जाम्पल्स. कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक अगर डाउट्स होंगे तो उनको पिक करूँगा. So you have these recordings downloaded and keep it with you. Can somebody do this job beta from December, January batch? हाँ जी सर, ओके, I will download and forward. हाँ बेटा, navigation के बेटा जो भी lectures होंगे, just forward to November batch. You can forward to any one of them and they will then share with them. So keep these with you. So you will have a update. So मैं मंडे को ही इनके साथ कॉक्ड हैट कवर कर दूंगा, so that you by Monday evening you get the recording. ठीक है सर, ठीक है, चलेगा. मैं निखिल को फॉरवर्ड कर दूंगा सर. ओके बेटा, ग्रेट. और बताओ बेटा. बस सर, अब और कुछ नहीं. ओके ओके सर, थैंक यू.
ओके, कौन सा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें सबसे ज्यादा डर लग रहा है? नेवल आर्क। ओके, और कौन सा सब्जेक्ट है जो नेवल आर्क किया था सबसे ज्यादा? सेफ्टी सेफ्टी। सर नेविगेशन तो हो जाएगा, वो थोड़ा मतलब ऐसा है, प्रैक्टिस है उसमें, उसका वही है, क्योंकि नेविगेशन में चार्ट वर्क ये सब प्रैक्टिस छूट गया है ना, अभी 2 महीने से किया नहीं। तो स्टार्टिंग का 1 महीना ही असाइनमेंट किया था, उसके बाद तो छुआ नहीं है, तो उसकी भी प्रैक्टिस चली गई है हम लोगों की। बाकी और करते आ रहे हैं। नेवल आर्क में डर लग रहा है सर, और सेफ्टी इजी है। ओके, ऑल राइट। सर आपने वो एक दिन का री कौन से सब्जेक्ट के लिए रखा है? बेटा वो तो जिस सब्जेक्ट में कोई जिसमें भी आएगी उसी के लिए रखा है। He can have 2 slots, Saturday morning and evening for 2 subjects. I don't anticipate somebody would require 3. नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके, सी यू गाइस, नाइस डे session. Hopefully this will be my last session with the November batch. So all the best to you guys. Thank you sir, thank you. Any problem, the WhatsApp group is live and open, so you can share your problems there. एक बेटा मैं तुम्हें ना आज एक लिंक भेजूंगा, that is the feedback form. So उसको आज ही फिलअप करके सबमिट करा देना. So don't forget, just submit it, because that is one checklist item in issuing your certificate. So fill up that form and submit it back. So that's all beta. So see you. Bye bye. Bye sir, bye. Have a nice day sir, bye. Okay beta, bye bye. Thanks. Thank you sir, see you sir, good day. Thank you beta. Thank you sir. Good day, thanks.